पेपर है उसका प्रेसी अटेम्प्ट किया है और सोल्यूशन वो देखते हैं ऑनलाइन वेबसाइट से। प्लीज डू नॉट रीड द सोल्यूशन ऑफ द प्रेसी फ्रॉम एनी ऑनलाइन वेबसाइट, क्योंकि ऑनलाइन वेबसाइट पे कोई भी अपनी तरफ से प्रेसी लिख सकता है अपने हिसाब से। That is not a very authentic kind of a place or authentic kind of a source. इसीलिए I always advise students to buy a book, to have book, because book is always an authentic source. तो जब आपने प्रेसी की प्रैक्टिस करनी है तो बुक आप वो खरीदें जो इसी तरह प्रीवियस पेपर्स के बारे में बुक हो, जिसमें पेपर्स हो और उनके सोल्यूशन हो। नाउ दीज आर ऑथेंटिक काइंड ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है ना। Likewise, for example, जब आप guided writing practice करें, and then what students usually do is, for the purpose of their ease, so that they may not feel the need of buying a book, so what they do is that they mostly attempt a paper and then see the answers of the questions on online websites. So these online websites, please do not read it for the purpose of knowing about the solution of the Pressy and reading comprehension passage. Why? Because anybody can write any solution and you will be reading it and will be thinking as if it's a very good standard solution. But maybe the thing that is written by someone is not in a correct format. So that is the reason, please, use a book. राइट, बाय ए बुक। ये बुक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मटेरियल्स काफी हैं, लेकिन वो सारे मटेरियल्स आज मैं शेयर नहीं करूंगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो मटेरियल्स आपको नीडेड होंगे वो मैं शेयर करूंगा, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो। इज इट क्लियर? एनीथिंग अबाउट द मटेरियल रिलेटेड टू गाइडेड राइटिंग? ठीक है। Up. Then the other thing is, you need to memorize words from different words lists. Now I'm sharing the list that I have and I will send it today. क्योंकि सबसे पहले देखें, जब आप इस पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो जो vocabulary preparation है, it's an ongoing process, because vocabulary is not something that you can leave to the end or till the end and then you think that I will start preparing vocabulary in the last month, in 3 months or something like that, 3 weeks, sorry. What I always advise and what basically is the effective practice in preparing vocabulary is their vocabulary preparation has to be an ongoing process, ठीक है। अब vocabulary preparation के लिए हमारे पास हमने जो vocabulary prepare करनी है वो 3 categories of words, 3 categories of words that has to be synonym and antonym word list we need to have. Likewise, pair of words list we need to have, and likewise we need to have idioms, idiomatic phrases, right? Up for synonym and antonym, this is one of the handouts that I will share with you, and this handout include a lot of synonyms and antonyms, around 500 to 600, right? Or you need to start preparing. Up again, as I said, this is not the only list. You people can use your any list as per your convenience, लेकिन जहन में रखें कि vocabulary preparation के लिए जो lists हैं, those lists are to be focused on CSS papers. Those lists are to be made for the purpose of these competitive exams. देखें, स्टूडेंट्स पूछते हैं और आप में से एक स्टूडेंट ने पूछा भी है कि GRE वर्ड लिस्ट, मैं हमेशा कहता हूं GRE वर्ड लिस्ट इज अ स्टैंडर्ड वर्ड लिस्ट, लेकिन इट्स अ वेरी जनरल एंड वाइड. अब ideally if somebody can memorize the word list from GRE, that is the perfect standard word list. लेकिन उसमें यह है कि ज्यादा वोकेबलरी जनरल है, CSS से रिलेटेड नहीं है. CSS से रिलेटेड जो वर्ड वोकेबलरी लिस्ट है वो आपको मिलेंगी इसी तरह की फोकस लिस्ट में. सो दिस इज
ये लिस्ट मैं आज आपको सेंड करूंगा so that you start preparing vocabulary from it. Along with it, जो second category of vocabulary list है, that is related to pair of words. Now pair of words. So this is one of the list, pair of words list. This is 2020 edition, right? Can you see the list on the screen? Okay, अब देखें ये एक लिस्ट है which I will share with you, and this list has a lot of vocabulary items related to the pair of words. काफी अल्फाज हैं इसमें और ये लफ्ज लिए हैं प्रीवियस पेपर से, एंड देन a lot of vocabulary with related to pair of words. आप जिस तरह मैंने कहा सिनोनिम एंटोनिम के लिए आप पेयर ऑफ वर्ड्स की भी कोई सी लिस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन I advise student not to use a general pair of word list. यानी किसी भी गुड ग्रामर बुक को आप लेते हैं तो उसमें पेयर ऑफ वर्ड की लिस्ट होती है, या इवन पेयर ऑफ वर्ड्स के लिए यू कैन ऑल्सो बाय ए फुल बुक. लेकिन then again, buying something which is not only focused in CSS, so the problem may be that you may memorize so many things which may not come in this format of CSS, right? तो इसीलिए वो लिस्ट आप लें जो CSS पे फोकस्ड हो. सो फॉर प्रिपेयरिंग पेयर ऑफ वर्ड्स, दिस पर्टिकुलर लिस्ट आई एम गिविंग which you can use, or you can use any pair of word list. लेकिन जहन में रखें, अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना. इट्स नॉट अबाउट लिस्ट कि ये वाली लिस्ट वो वाली लिस्ट. ऑलवेज सेलेक्ट ए पर्टिकुलर लिस्ट एंड देन मेक इट अ टारगेट कि ये जो लिस्ट है इसी लिस्ट से मैंने तमाम अल्फाज याद करने हैं, ठीक है. एंड देन जनरली व्हाट हैपेंस कि जब आप लफ्ज याद कर रहे हो, एंड व्हेनेवर यू मैक्सिमली मेमोराइज वर्ड्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर लिस्ट, सो टिल दैट टाइम you ultimately develop the sense of understanding words. So then you become fluent in it. So what I'm basically saying कि इस तरह नहीं है, ये लिस्ट क्वांटिटेटिव नहीं है कि 500 है तो पूरे 500 आपने याद करने हैं. अगर 500 में से आपने 20-30 छोड़ दिए तो नहीं होंगे, बल्कि जब आप इनको याद कर रहे होंगे और सेंटेंसेस में यूज कर रहे होंगे इन अल्फाज को, तो खुद ब खुद जब आप तकरीबन फॉर एग्जांपल 40 to 45% लिस्ट किसी वोकैबुलरी लिस्ट में याद करें, तो उसके बाद देन you yourself start understanding, and then so many words which you might not have read the meaning, you can even guess the meaning of it, right? तो वो आपकी एक सेंस जो है आपका डेवलप हो जाता है. यानी फॉर एग्जांपल जब हम रीडिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल somebody does not have the reading habit, तो उसके साथ क्या मसला होता है कि हर 2-3 अल्फाज के बाद लफ्ज का मतलब उनको नहीं आता, ना वो उसको गेस कर सकता है. So he or she is unable to read in a fluent manner. लेकिन those who have the habit of reading, now after having the habit of reading, or if they are continuous and permanent reader, so they do not feel the need of even consulting dictionary. Why? Because they develop the habit and the practice of understanding the meaning of the meanings of the words through guessing. Means reading something, a new word come, but from the context they know the meaning of it. तो ये practice से ही होता है, right? So when it comes to language skills, when it comes to English language skills, it is all dependent on the practice. The more you practice, so the more fluent you will be. So this is the list related to the second category of the vocabulary that will come in the paper. Then the third category of vocabulary is related to idioms. So I also have a list of idioms with me. Let me see and let me show you that list. Idioms. Okay.
this is a list that I have, a very comprehensive list. There has the solved idioms that have come since 1971 in these competitive exams. So, you know, a very अच्छा, एमन ने क्वेश्चन पूछा है, देखें एमन, जब आप किसी वोकैबुलरी को याद कर रहे हो तो उसके साथ लिखा होता है that as which part of speech will it be used, यानी आप एक लफ्ज को देख रहे हो, उसके साथ लिखा होगा, कॉन्टेक्स्ट से क्लियर होगा कि दिस इज ए वर्ड, विल इट बी यूज्ड एज ए वर्ब, विल इट बी यूज्ड एज ए नाउन। और जब आप उसकी मीनिंग देखेंगे और उसकी मीनिंग याद करेंगे, सो इट्स ग्रामेटिकल कैटेगरी यू योरसेल्फ विल मेमोराइज, और जब उसको आप यूज करेंगे तो उसी कैटेगरी ही में यूज करेंगे आप। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यस, व्हाइल प्रिपेयरिंग वोकैबुलरी, और हर एक वर्ड के साथ जो उन्होंने मीनिंग दिया होता है, दैट मीनिंग विल टेल यू अबाउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी, कि क्या ये एज ए नाउन यूज होगा, क्या ये एज ए वर्ब यूज होगा, क्या ये एज एडजेक्टिव यूज होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? यस हेमन? ओके, अब जिस तरह मैंने पहले कहा, मैं दोबारा बार बार ये बात कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। दिस इज नॉट द ओनली लिस्ट, आप कोई सी भी लिस्ट से इडियम्स याद कर सकते हैं, किसी भी लिस्ट से, लेकिन जहन में रखना है, आई एम रीआइटरेटिंग इट अगेन, डू नॉट सेलेक्ट एनी लिस्ट which is generally developed. Select a list of idioms that totally emphasizes and is totally focused on these CSS papers and competitive exams, so that you may not, you know, prepare something in a general manner, right? So, you know, this is the list. Abhi, what I will do is that I will share these 3 lists with you. आपने vocabulary को prepare करना अभी से शुरू कर देना है, ठीक है? You need to start it from today, so that you may not have any problem when it comes to, you know, these vocabulary exercises. Please keep it in mind. ये जो vocabulary exercises है, 30 marks के जो question है, these are statistical kind of questions. What I mean by statistical question, if people can prepare well for these exercises, let's suppose objective exercise 20 marks, if you have the preparation for that 20 marks objective section, synonym and antonym, so then the chances are that you can get maximum marks, you can get 20 out of 20. But if you are not prepared well for these exercises, so then the chances are that you can have the minimal marks. So I always emphasize that your vocabulary memorization has to be ongoing and has to be a continuous process. एक और चीज भी सुन ले, ये जो आप vocabulary memorize करेंगे, ठीक है, ये तो exercises आ रही हैं इस पेपर में, लेकिन इस पेपर के अलावा ये जितने vocabulary आप memorize करेंगे, will it help you? क्या इसका कोई आपको और benefit भी होगा कि नहीं? कोई मुझे बताएगा? वेरी गुड। देखें, हुरिया ने लिखा है एसे राइटिंग, लाइकवाइज शहबाज ने लिखा है प्रिसाइस में, लाइकवाइज अफशान ने लिखा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट। अब देखें, ये जब मैं फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज की बात करूं या इंग्लिश लैंग्वेज की बात करता हूं, व्हाट इज ए लैंग्वेज मेड अप ऑफ? व्हाट इज ए लैंग्वेज मेड अप ऑफ? What is a language made up of? Vocabulary. Good. ये vocabulary है। कोई भी जुबान जो है वो किस चीज से बनी है? वो लफ्जों से बनी है। And then please keep it in mind, if I feel, let's suppose, difficult writing something, if you feel difficulty in writing, those difficulties primarily come because of the shortage of vocabulary, because of the lack of vocabulary. And if you will have extended and expanded kind of vocabulary with you, you will never have problem in using language, may it be in speech or may it be in writing.
आप ऐसे लिखेंगे 2500 वर्ड्स का, और उस ऐसे में अपार्ट फ्रॉम द अदर ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स, it will totally depend upon the vocabulary. If you will have a very refined kind of vocabulary with you, you will write in a very continuous manner. You will write in a very fluent manner, right? But when it comes to, for example, the lack of vocabulary, so this lack of vocabulary will give you problem even in your writing, and even writing in other subjects also, right? उसके बाद ये vocabulary please start preparing it. ये list में send करता हूँ. If I share these lists in the Zoom chat, will it be fine if I share it in the Zoom chat now? ताकि ये 3 लिस्ट आपके पास अभी आ जाए, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे. Okay, so let me share these. Just a minute. क्या इस तरह हो सकता है कि मैं आपको अब जब शेयर करूं जूम चैट में एंड यू डाउनलोडेड विद इन द क्लास? यस नायाब, आई थिंक इट्स पॉसिबल. ठीक है. देखिए शाहजेब, अभी मैंने नोट्स आपको दिखाए नहीं है ग्रामर से रिलेटेड, वो भी मैंने थोड़ा सा आपके ईज के लिए, पूरे पूरे ग्रामर बुक नहीं है बल्कि कुछ नोट्स हैं ग्रामर के. ठीक है, वो भी मैंने डिस्कस करना है. ठीक है, क्योंकि उसके मटेरियल मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाए. हम अभी मटेरियल डिस्कस कर चुके हैं. जो आपकी गाइडेड राइटिंग है वो बुक, वो मैं शेयर करूंगा. और ये जो अभी वोकेबलरी से रिलेटेड ये लिस्ट है, ये मैं अभी आपको जो है ग्रुप में शेयर करता हूं. एंड यू प्लीज डाउनलोड इट, राइट? Just a minute. Well, I will share it in Zoom, and then any one of you can share it in your group, because mostly we are not there in your WhatsApp groups, right? So anyone can download and can then ultimately share it in the WhatsApp group for your ease, right? Okay. सबसे पहले ये वोकेबलरी लिस्ट में आपको शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद आई विल टॉक अबाउट द मटेरियल ऑफ द ग्रामर सेक्शन, राइट? मैं आपको मटेरियल दिखाऊंगा एंड देन आई विल शेयर इट विद यू फ्रॉम टाइम टू टाइम. ये जो लिस्ट है तीनों, सिनोनिम, एंटोनिम, पेयर ऑफ वर्ड्स एंड इडियम्स, ये लिस्ट मैंने शेयर की है. एंड आई वुड ask you to start your preparation, means memorizing your vocabulary, right? क्योंकि when we talk about this particular paper, बाकी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. जो वोकेबलरी है ये आपने प्रिपेयर करनी है एंड यू नीड टू मेमोराइज. वोकेबलरी के प्रिपरेशन में is only your memorization matters, right? So you need to start.
and then you need to start from today. 3 to 4, 5 words, 3 words, 3 words. Let me give you just a task. I will ask each one of you to prepare minimum three words from all these 3 lists. 3 words from synonym and antonym, 3 words from pair of words, and 3 words from idioms. Memorize it, and use your own strategies for memorizing. And then if there any problem come in memorizing a word, we can discuss that in the next class. क्योंकि मैं सिर्फ ये आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर आप याद कर रहे हैं तो आपको याद करने में क्या मसले आ रहे हैं वोकैबुलरी में, then we will discuss that in the class कि नहीं आप ये वाली स्ट्रेटजी यूज करें, आप ये वाली स्ट्रेटजी यूज करें. Are you understanding? Well, some of you complain that you have not received these lists. Those who have received, please download it. Please download these and then share it in your WhatsApp group. देखें, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि प्रिपेयर 3 अभी स्टार्टिंग के लिए 3 सबसे आप याद करें और देखें कि नेक्स्ट क्लास तक आपको वो रिटेन होते हैं और आप उनको किस स्ट्रेटजीज के हिसाब से याद कर रहे हैं. तो अगर आपने कल आज याद किए हैं, कल लेट सपोज हमारी दोबारा क्लास हुई या परसों तरसों, उस वक्त तक अगर आपको याद रहे तो यू टॉक अबाउट दैट स्ट्रेटजी कि आपने क्या तरीका यूज किया था, कि आपको अभी तक याद है, क्या कर रही हैं, राइटिंग में यूज कर रही हैं, स्पीच में यूज कर रही हैं. And then along with that, if some of you face difficulty that after memorizing, then tomorrow you have not been able to remember it, so then we can also discuss that so that we can talk about some strategies कि आप जब याद करेंगे वर्ड लिस्ट से तो आप कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं. ठीक है, ओके. Now let us talk about the third part of the preparation, that is related to grammar section. Now let me show you the notes related to grammar section. Okay. Usually for preparing students about grammar section, well, the standard practice is to read rules from the grammar. लेकिन जिस तरह से आप में से कुछ ने कहा, and yes, it is, I do understand this limitation, that grammar book is a bulky kind of a book, and then grammar book has so many rules, and then so many rules are related to so many different components in English language. So how to make it convenient so that you may not read whole of the grammar book? So what for the purpose of making it a bit easy and focused for the student is that related to grammar section, I share with them 3 different handouts. Now, one handout is related to the rules with practice, some exercises. Other handout is related to the practice. And then the third handout, I share with them the actual marking on the previous exercises, means previous exercises, the attempt of it, and then the correction on it, so the student understand कि किस किस्म की mistakes आई हैं और किस किस्म के हमने उसको correct करना है. Can you see it on the screen, the first handout? अच्छा, अब it's a very effective handout. You can use any grammar book, लेकिन to be focused, to be more convenient for you, this is a handout related to grammar notes. अब इसको जरा आप देखें, I'm scrolling it down. This handout is very effective. Why? क्योंकि इसमें rules जो जरूरी होते हैं with related to parts of speech वो लिखे हैं. देखें, nouns के rules इसमें लिखे हैं, pronouns के, adjectives के, preposition के, conjunctions के, types of conjunctions के rule लिखे हैं. फिर उसके बाद articles के rule लिखे हैं. Likewise, even tenses के rule लिखे हैं, subject verb agreement के लिखे हैं, and adverbs के लिखे हैं. Likewise, tenses के rules लिखे हैं.
And then, you know, the effective thing about this handout is, okay, with each rule an exercise and example is given. यानी भी आप देखें, जब आप नाउन से रिलेटेड रूल पढ़ेंगे, रूल नंबर 1 लेट सपोज, तो आपके उसके साथ एक्सरसाइजेस भी आपको दी हैं, विच विल गिव यू अंडरस्टैंडिंग कि वो रूल कहाँ पे वॉयलेट हो सकता है, अगर सेंटेंस में क्या आएगा तो वो इनकरेक्ट होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. अरवा, आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट द हैंडआउट्स ऑफ पंक्चुएशन रूल्स. ठीक है, वो सब मेरे जहन में है. ग्रामर के हैंडआउट्स मैंने अभी डिस्कस करना शुरू किया है, हर एक चीज मैं आपको दिखा के शेयर करूंगा. ठीक है, यू डोंट नीड टू वरी. तो ये ग्रामर से रिलेटेड है. Yes, this handout is of 80-85 pages. अब देखें, प्लीज कीप इट इन माइंड, ये ग्रामर जो है, इट इज नॉट ए बुक विच हैज टू बी रेड एट वन टाइम. आप वक्त के साथ साथ रूल थोड़े पढ़ते जाएं और एक्सरसाइजेस करते जाएं. यानी फॉर एग्जांपल, आज मैंने if I give, let's suppose, half an hour, so then within that half an hour I have read some rules and then have gone through the exercise of it. Are you understanding? Likewise, if not tomorrow, twice or thrice in a week, I go through some rules and then, you know, attempting previous exercises. ठीक है, तो इन रूल्स को आपने, you don't need to read it as a reading material, rather you need to read it for understanding and knowing about the practice of something. तो एक मैं आपको ये handout दूंगा. This handout basically is related to the rules. The second handout with reference to your preparation about grammar section is that I will share a workbook with you. This workbook basically has the exercises. अब इसमें rules नहीं है, exercises है. रूल के लिए मैंने आपको एक हैंडआउट शेयर करना है, और अब ये एक्सरसाइजेस हैं. एक्सरसाइजेस किस किस्म की है कि अब इसमें रूल्स नहीं है, लेकिन एक साइड पे इनकरेक्ट सेंटेंसेस है, दूसरे साइड पे उसका करेक्ट है. सो यू नो, दिस इज फॉर द प्रैक्टिस थ्रू एक्सरसाइजेस. अब इस आप हैंडआउट में देखें, प्रेपोजिशन से रिलेटेड एक्सरसाइजेस हैं. लाइकवाइज फॉर एग्जांपल ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड एक्सरसाइजेस हैं, वर्ब से रिलेटेड एक्सरसाइजेस हैं. Then some other common errors related to some other parts of speech, may it be noun or adjective or adverb, you know, ये तमाम exercises हैं. ठीक है, so this is a workbook. This is for the purpose of practice. एक मैं आपको शेयर करूंगा notes जिसमें rules हैं और उस rules के साथ examples हैं. And then in order to practice, so then this is a workbook that I will share, जिसमें से आप exercise करेंगे, you know, correct and then incorrect, and then you need to go through the correct version of it to understand. This is the second handout that I will give you for your preparation related to the grammar section. And then while preparing yourself for the grammar section, I am talking about the question where upon the, you know, some incorrect sentences will be given and you will have to correct those sentences. So I am talking about with reference to that question. उस question के लिए ये handout भी है, उस question के लिए ये workbook भी है, और उसी question 10 marks question whereupon you need to identify the mistakes in order to give you the understanding of the errors in the previous, you know, CSS paper. So you know, you just go through this handout. अब इस handout में क्या है कि actual papers में वही 10 marks का जो question आया है और उस पे करेक्शन की है और फिर एक्सप्लेन भी किया है, सो दैट यू वंस यू रीड इट यू अंडरस्टैंड कि किस किस्म के मिस्टेक्स आते हैं और सेंटेंसेस में किस किस्म के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. सो अगेन, दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ योर practice and understanding actual sentences that have come in the previous paper and understanding the mistakes that have come related to the sentences in the previous paper. So these 3 handouts are related to your question, which is of 10 marks, and in that question you will have to correct, you know, you have to correct the, you know, sentences. And then these handouts are also effective
with reference to attempting a question of preposition of 5 marks where you will have to put some prepositions. ठीक है, क्योंकि जो rules का डॉक्यूमेंट में आपको शेयर करूंगा तो उसमें आपका preposition का सेक्शन भी कवर हो रहा है और इसमें आपके जितने भी इन सेंटेंसेस में मिस्टेक्स आते हैं वो भी इसके थ्रू कवर होंगे। और जिस तरह हमने कहा कि ये हैंडआउट्स में आपको आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आपकी रीडिंग के लिए, लेकिन we will discuss all these grammar exercises, this question that have come in the previous papers, for example previous 5-6 years papers. So this is the, these are the handouts related to the grammar. अब ग्रामर के पोर्शन में सिर्फ आपने सेंटेंस करेक्शन नहीं करनी होती बल्कि आपने पंक्चुएशन भी करनी है। अब पंक्चुएशन के लिए आई विल शेयर a particular handout. पंक्चुएशन के रूल्स आप ग्रामर बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन the handout that I have is very focused and is related to all the important punctuation marks. ये पंक्चुएशन जो है पंक्चुएशन का आपको लिस्ट नजर आ रही है? अच्छा, let me come to the question of Sarmad. देखें Sarmad, in these preparatory classes, I have not started your preparation and discussing of the questions. आज हम सिर्फ इस सब्जेक्ट को, इस पेपर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उससे रिलेटेड मटेरियल्स के मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद यस, इट्स अबाउट सेल्फ स्टडी, लेकिन ये तमाम चीजें हम क्लास में डिस्कस करेंगे और इन ए काइंड ऑफ टीचिंग मैं आपको इन तमाम चीजों के बारे में बताऊंगा। मतलब वी विल properly discuss what is Prezi, how Prezi has to be written, with previous, exercises. Likewise, we will discuss, passage comprehension. We will practice, previous exercises. Likewise, जितनी भी ये grammar की exercises हैं, ये सब हम discuss करेंगे और उससे related rules discuss करेंगे। ये जो handouts हैं, these handouts are for the purpose of your self study, कि जब हम एक चीज discuss करेंगे क्लास में, और क्योंकि हमारे तो we only have numbered kind of lectures, 10 lectures we need to give to one particular paper. Then after that, whenever you will be preparing on your own, so these are the handouts on the basis of which you can prepare, right? Sarmad, is it clear? दूसरा, आप में से लोगों ने परेशान नहीं होना, आप ये ना सोचें कि आज तो हमने कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, because in first lecture I do not discuss any question. I first of all make and develop this understanding about paper, कि पेपर है क्या, उसकी प्रिपरेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, प्रिपरेशन के लिए हैंडआउट्स किस किस्म के होने चाहिए, और फिर उसके बाद देन यूजुअली आई स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड लेक्चर, यानी जो सेकंड लेक्चर हमारा है उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करूंगा, दैट इज प्रेसी, और प्रेसी को हम डिस्कस करेंगे और फिर हम प्रेसी को अटेम्प्ट करेंगे। क्लास में आपको मैं एक्टिविटीज कराऊंगा प्रेसी अटेम्प्ट करने के, फिर उसको डिस्कस करेंगे, राइट अप को डिस्कस करेंगे, फिर प्रीवियस पेपर्स में से प्रेसी अटेम्प्ट करेंगे, कुछ मैं आपको एज असाइनमेंट दूंगा विच यू हैव टू कम इन द नेक्स्ट क्लास। सो इसी तरह हम इसको लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। these days this has become a very famous saying कि आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। हुरिया, ये जो बुक है मोस्टली जो इस किस्म की बुक्स है उसमें तमाम चीजें कवर हो रही होती है। जी, आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल ये सना ने कहा है, तो आपने घबराना नहीं है। घबराना मीन्स कि I will not leave anything undiscussed. We will discuss and we will also have the practice. देखिए, हुरिया ने क्वेश्चन पूछा है। हुरिया, ये जो मैंने आपको बुक शो की है, ये दिस बुक इज बेसिकली रिलेटेड टू प्रीवियस पेपर्स, और इस किस्म की बुक में आपके प्रीवियस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए होते हैं उन सब की सॉल्यूशंस होती हैं। लेकिन क्योंकि बुक में अगर फॉर एग्जांपल 10 पेपर्स हैं तो सिर्फ 10 पेपर से रिलेटेड ही
vocabulary words होंगे, लेकिन those vocabulary, that vocabulary list is not sufficient, इसलिए vocabulary के लिए आपने अलहदा लिस्ट यूज करनी है, ठीक है, राइट, ओके। अब ये पंक्चुएशन है। यूजुअली पंक्चुएशन का मैं क्या करता हूं कि ये जो हैंड आउट है इसको हम डिस्कस करेंगे, पंक्चुएशन के रूल्स को डिस्कस करेंगे, और फिर जो पंक्चुएशन की एक्सरसाइजेस आई है प्रीवियस पेपर्स में उन एक्सरसाइजेस को हम अटेम्प्ट करेंगे। पहले आप अटेम्प्ट करेंगे, फिर आपके सामने क्लास में मैं उसको अटेम्प्ट करके पंक्चुएट करके एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि क्या उसमें मिस्टेक्स हैं, एंड देन इंशाल्लाह वी विल डू इट फॉर द लास्ट 6 to 7 ईयर पेपर्स। हम इस तरह से पंक्चुएशन को डिस्कस करेंगे। तो ये पंक्चुएशन का हैंड आउट है विच आई विल शेयर। ये सारे हैंडआउट्स मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, लेकिन टाइम टू टाइम एज वी विल प्रोसीड इन द कोर्स, so then I will share it with you. So these are the handouts that I will share with you, right? Okay, so this was about handouts. Up now, as we are left with the not much time now, as we will start discussing guided writing first, and we will discuss precise writing, précis writing in the next class. So in today's class, if you have any question, general question, any kind of confusion you have about anything, you can ask. Even any kind of apprehension or problem you think you are facing, so you can also ask about it. Shazib, the grammar book I already have, grammar notes I have shared. नायाब, आई विल कम टू योर क्वेश्चन, लेकिन एक चीज मैंने आपको अभी नहीं दिखाई कि क्योंकि आपके ग्रामर सेक्शन में ट्रांसलेशन भी एक क्वेश्चन है, और ट्रांसलेशन के लिए दिस इज द बुक दैट आई रिकमेंड एंड दिस इज द बुक दैट आई विल शेयर। लेकिन जब वो टाइम आएगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू बम्बार्ड यू विद सो मेनी थिंग्स, ठीक है, ताकि वक्त के साथ साथ, लेक्चर के साथ साथ उस चीजों को एक्सप्लेन करके, तो जब आप ट्रांसलेशन करेंगे, ट्रांसलेशन की बेसिक रूल्स के बारे में, और ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर उर्दू का इंग्लिश में किस तरह हम कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए इट्स अ वेरी basic book, a very old one but a very effective. So this book, once we will start discussing translation, I will share, ठीक है। अभी आज मैंने आपके साथ सिर्फ vocabulary list शेयर की है, वो इसलिए की है क्योंकि you need to start preparing the vocabulary, because preparation of the vocabulary is important and it has to be an ongoing process, ठीक है। अब in the next class हम précis डिस्कस करेंगे। So I would like you to read something about précis. Let me share their book, क्योंकि उस बुक में précis के कुछ रूल्स भी हैं, ठीक है। सो मैं वो बुक भी आपको शेयर करता हूं, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब आप आए, आपने précis के बारे में कुछ पढ़ा हो, और हम उसको डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल आल्सो हैव द प्रैक्टिस ऑफ इट, ठीक है। लेट मी शेयर दैट बुक ऑफ précis, ताकि आपकी जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए। जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर द बुक ऑफ précis। और जब मैं आपके साथ मटेरियल शेयर करूं तो प्लीज समवन डाउनलोड इट एंड देन शेयर इट इन योर ग्रुप, राइट? précis, जस्ट अ मिनट।
अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि आपने नेक्स्ट क्लास तक करना क्या है। नंबर वन, प्रेसी की बुक मैंने आपको शेयर की है। आपने प्रेसी के रूल्स पढ़ लेने हैं कि व्हाट इज प्रेसी। सिर्फ रूल्स पढ़ें कि प्रेसी कहते किसको है, किस किस्म की गाइडेड राइटिंग है ये, हाउ इज इट डिफरेंट देन समरी। ठीक है। फिर उसके बाद प्रेसी को लिखने से पहले हम पैसेज को रीड किस तरह करते हैं, कुछ ये जनरल रूल्स पढ़ लें, मैं डिस्कस करूंगा। एंड आई ऑल्सो हैव अ लेक्चर प्रिपेयर्ड, आई हैव प्रिपेयर्ड अ लेक्चर फॉर इट, and I have PowerPoints which I have prepared for the lecture, which I will also share with you in the next lecture, after the next lecture. मेरे पास हर एक चीज I have prepared it, लेकिन सिर्फ नेक्स्ट क्लास तक आपने क्या करना है कि एक प्रेसी के रूल्स पढ़ने हैं। ये जो बुक मैंने आपको शेयर की है इससे आप पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज प्रेसी, उसके रूल्स क्या है, प्रेसी है क्या, लिखते हैं किस तरह है। ठीक है। और if not from this book, if somebody has any other good book about writing presi, so do read from that thing, and please keep it in mind, ये सब जहन में रखें जब भी आप प्रेसी के रूल्स पढ़ें। कभी भी प्रेसी के रूल्स या किसी चीज के रूल ओपनली किसी भी वेबसाइट से गूगल पे ना पढ़ें, क्योंकि वेबसाइट्स पे कोई भी कुछ भी लिख रहा होता है। आपने एक ऑथेंटिक बुक से रूल्स पढ़ने होते हैं। ठीक है। so that in the next class जब मैं प्रेसी डिस्कस करना स्टार्ट करूं, so I like all of you to have read something about it. This is one thing. The other thing is कि नेक्स्ट क्लास जब भी हो, कल हो, परसों हो, तरसों हो, जो मैंने आपको वोकैबुलरी लिस्ट दी है, आप सब ने एक एक लिस्ट से, 3 लिस्ट हैं, मिनिमम 3 अल्फाज याद करने हैं। 3 अल्फाज आपने सिनोनिम से याद करने हैं, 3 अल्फाज आपने एंटोनिम से याद करने हैं, 3 आपने पेयर ऑफ वर्ड से, एंड 3 वर्ड्स जो है वो आपने ईडियम से याद करने हैं। ठीक है। अब ये मैं आपसे याद इसलिए नहीं करा रहा कि मैं उन लफ्जों के बारे में पूछूंगा आपसे, बल्कि मैं आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट दिस प्रैक्टिस ऑफ memorizing from a word list. And the way you start memorizing, is it effective, is it not effective, have you been able to retain, हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। and then I will talk about some effective parameters. if you are not following it, so then you need to follow it while memorizing words. ठीक है। तो ये 2 चीजें आपने नेक्स्ट क्लास तक करनी है। ठीक है। then let me come to your questions. ठीक है। सुमेरा गाइडेड राइटिंग वो जो बुक है वो मैंने आपको शेयर कर दी है। इस बुक में प्रीवियस पेपर्स हैं और उसके तमाम क्वेश्चंस की सोल्यूशन है, लेकिन आप सिर्फ उससे प्रेसी पार्ट को पढ़ें। ठीक है। अच्छा, असदुल्लाह हैज आस्क्ड कि हाउ टू डेवलप रीडिंग हैबिट्स। रीडिंग हैबिट हैज टू बी डेवलप्ड थ्रू रीडिंग। असदुल्लाह, देखें आप सबको आपके टीचर्स ने कहा होगा कि स्टार्ट न्यूज़पेपर रीडिंग। क्यों कहा होगा? ताकि आपका हैबिट स्टार्ट हो जाए रीडिंग का। और जब भी आप रीडिंग कर रहे हो न्यूज़पेपर से, सो इट इज इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिशियल इन 2 एस्पेक्ट। एक तो आपको कंटेंट का पता चलता है विच विल हेल्प यू इन सम अदर सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स एंड पॉलिटिक्स एंड समथिंग, एंड देन you also know how thing is written so that you can copy the expression, can also copy the words and memorize the words. ठीक है। तो रीडिंग हैबिट। और दूसरा, अगर किसी को रीडिंग बोरिंग लग रही हो तो सेलेक्ट रीडिंग एज पर यूर इंटरेस्ट। कोई आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स जो है पढ़े, इंटरेस्टिंग होते हैं, एज पर यूर इंटरेस्ट कोई आर्टिकल फ्रॉम एडिटोरियल सेक्शन पढ़े। ठीक है। देखिए कुलसूम, पेयर ऑफ वर्ड्स आप किसी भी अच्छे बुक से पढ़ सकती हैं, एंड करीम दाद चुगताई बुक इज एन इफेक्टिव वन, यस यू कैन। ठीक है। someone also have asked me question। देखिए अरवा, जो पास्ट पेपर है उससे इसलिए आपने प्रिपेयर करना है कि जब एक टाइम आए आपको प्रेसी का पता चल जाए, कॉम्प्रिहेंशन का, तो तब आप पास्ट पेपर ही अटेम्प्ट करते जाएं। क्यों पास्ट पेपर अटेम्प्ट करते जाएं? क्योंकि उसी के बेस पे, उस ही टेक्निक और पैरामीटर पे आपका क्वेश्चन आएगा। इसलिए जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, एक तो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग आप ले रही है, लेकिन इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के बाद जब आप प्रैक्टिस करना चाहे वो क्वेश्चन, सो देन आई ऑलवेज एडवाइज
कि आप पास्ट पेपर करें, क्योंकि वो पास्ट पेपर से आपकी प्रैक्टिस हो रही है, प्रिपरेशन हो रही है फॉर द एक्चुअल पेपर। वैसे अगर आप प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन आप जो है जनरली इसको प्रैक्टिस करना चाहें तो मुख्तलिफ ग्रामर बुक्स में भी है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स भी इसके लिए है, लेकिन डू नॉट गो फॉर दैट, गो फॉर द पास्ट पेपर जब आप प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आज जो हमने डिस्कस किया है उससे कुछ क्लैरिटी आई है कि ये पेपर क्या है, प्रिपरेशन किस डायमेंशन में हमने करनी है और क्या क्या हमने करना है इसमें। ठीक है, सही। So then please keep it in mind that what you have to do till next class, right? And do read and do memorize some words. In the next class, inshallah, we will start discussing the question number 1, that is Presi writing, right? Okay, till then, thank you class, thank you. एंड बिफोर यू एंड आई लीव, एक मैं आपको लास्ट बात बताऊं, जितने मैंने हैंड आउट्स अभी सेंड किए हैं, बाकी में व्हेनेवर वी आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग दैट क्वेश्चन, तो उससे पहले मैं टाइम टू टाइम आपको सेंड करता जाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।